and then optional. Okay, 500 marks. तो मो कहवा कथा कि सबुठु बेसी इंपोर्टेंस को टॉपिक्स रे तमे ने दउचो साइमल्टेनियस सब साइमल्टेनियस जे माने फिर भी सबुठु बेसी इंपोर्टेंस को टॉपिक रे दउचो सर ऑप्शनल को ओके देखो तुम यदि मेंस रे देखो तुम ऑप्शनल रे एक्स्ट्रा 10 मार्क्स रखो कि जीएस रे एक्स्ट्रा 10 मार्क्स रखो ओके फाइनल काउंट रे एवरीवन विल हैव द सेम वेटेज राइट तो मोर माने पॉइंट ऑफ व्यू एटा कि ऑप्शनल जो दीटा पेपर हला केते 500 मार्क्स एथिक्स 250 और एसए 250 ओके ए सब्जेक्ट गुड़ा कर सबुठ बेसी इंपोर्टेंस दबा दरकार राइट कने ए सब जिंस रे क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल एथिक्स रे माने मु कहूची जदी लास्ट माने 11 इयर्स जो क्वेश्चंस माने जोडा कहली 2013 रो 2023 ओके if you can solve all of them and I believe that most of the questions will be directly copied and pasted in the OPSC paper okay हेलो सर हाँ कहा सर एथिक्स में यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर देखिया दरकार yes बिकॉज़ अदर स्टेट सर्विस रो भी ना एथिक्स ना ना पेपर अदर अछि स्टेट सर्विस देखा दरकार नहीं एब्सोल्युटली दरकार नहीं अदर स्टेट सर्विस देखो बहुत टाइप रो स्टेट्स अछि सेगुडा को माने किछि तांकर सेमति स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं हला यूपीएससी रे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबो तमे सिलेबस वाइज डीकंस्ट्रक्ट करि परिबो कि को पोर्शंस गुडा इंपोर्टेंट अछि आ सेडा फॉलो करियर अछि लाइक एथिक्स रो टर्मिनोलॉजीज गुडा ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज गुडा तमरा निजरा डेफिनेशंस प्रिपेयर करिवो तार एग्जांपल्स प्रिपेयर करिवो ओके कि केस स्टडीज रो केमति अप्रोच रहे दरकार हेलेडा से एग्जाम हॉल में फर्स्ट सेक्शन ए टा करिवो ओके तापर सेक्शन बी टा करिवो माने केस स्टडीज पार्ट टा ओके नहले टाइम होबनी केस स्टडीज तुम स्टार्टिंग रे कर दबो तुम रिलैक्स माइंड रे करिवो और टाइम रो किसी कॉन्शियस नथिबो इनिशियली तो पेपर कंप्लीट करे बहुत डिफिकल्ट हबो काहे कि ना पेपर 1 माने सेक्शन ए टा बहुत लेंदी थाए ओके औ एसए पे कोन केमती प्रिपेयर करछो सब ऑल ऑफ यू प्लीज रेस्पोंड सर ऐसे पई जो यूपीएससी रो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा थिला ताकू सर एबे रिव्यू करछो रिव्यू करछो किंतु सेटा टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करियर अछि ओके लेट अस से एनवायरनमेंट हला एजुकेशन हला डेमोक्रेसी हला एमती कि साइंस एंड टेक रहला एमती टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करिवो हला मु गोटे एसे रे गोटे गोटे पीडीएफ शेयर करथिले सेटा माने गो थ्रू करथिलो कि हां वी सर ऑल गॉन थ्रू दैट पीडीएफ तो सेतरे बहुत सारे कोटेशंस मिली परिबो माने यूज करिया पई आउ अनुदीप दूरी सेठी तांकर जो एसर स्ट्रेटजी थिला सेटा फॉलो करथिलो कि हां हां सर Yes, ओके sir. ग्रेट तो फास्ट में स्टार्ट करिए एसए पेपर रे हला एसए पेपर रे हमें कोन एबे दीटा एसए लिखियो पडुची राइट लास्ट ईयर टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस एटा हे गला ता पूर्व तो हमको गोटे ही एसए माने पैटर्न थिला ओके तो मोस्ट प्रोबेबली गोटे पार्ट तो फिलोसॉफिकल हवर चांसेस अछि हला तो फिलोसॉफिकल एसे यू नीड टू प्रिपेयर ऑन हाउ टू टैकल द फिलोसॉफिकल एसेज राइट तो सेटा को केमिति टैकल करि परिबो सेटा टिके देखिबो और नॉर्मली एसे रे जो टॉपिक्स छुडा रहला लेट अस से एनवायरनमेंट एजुकेशन ये साइंस एंड टेक ओके डेमोक्रेसी से सब टॉपिक्स गुडा को कवर करिवार अछि ओके मु गोटे एसे रो सैंपल गोटे शेयर करूची you can check it
Can you see my screen right now? The Evernote screen? Yes, sir. Okay. तो मु केतरा फ्रेमवर्क बनैछि सेटा मु शेयर करूछि. Let us say education. Education हमें को टाइप रो कोर्स यूज करि परिबा. Okay. कि एजुकेशन the education purpose is to replace an empty mind with an open one. हला. एमति किछि टा निजर कोर्स कलेक्ट कर देबो. Okay. तापर चाहेले एनेक्डोट रु भी स्टार्ट करि परिबो. Okay. ऐसे इधर माने निजर इंट्रोडक्शन किछि बनै परबी. इंट्रोडक्शन थीसिस से जो पार्ट जेमति रहे तापर जेमति मल्टी डायमेंशनल लिखबार थाए सेमति करि परिबो. अदरवाइज कोटा एनेक्डोट रु भी स्टार्ट करि परिबो. तापर किछिटा गुड लाइंस भी ऐड करि परिबो. Let us say education is not necessarily about conforming to the societal expectations but reforming the society. Education ought to be about progressive risk taking. Okay. Let us take for an example Raja Ramon Roy. ताको example दे परिबो कि सेतबेले सती प्रथाटा प्रिडोमिनेंट थिला. Okay, that was the norm of the society, that was the ethics. Ethics is the set of norms that the society follows. हेले सी तांको एजुकेशन यूज करी से ओडे he tried to reform the society. He tried to went against the flow, and that will be termed as a progressive risk taking. Okay, सेमती टाइप रो किछि किछि एग्जांपल्स दे परिबो. Okay, it let us say what a quotes अछि. If men were rational in their conduct, intelligence would be enough to make the whole world a paradise. But humans are actuated by passion, which distort their worldview. That's why heart is as important as head. एटा बहुत भलो कोट अछि. सेटा को भी यूज करी हो. Okay. तापरे रहला स्ट्रक्चर्स ऐसे रो. Can you people read from the screen? Sir, All of you? visual होने पूराटा माने होल माने A4 टा माने विजिबल होने अधा विजुअल होछि. हाँ से जेतिकी विजिबल होची माने रीड करी होची कि से लास्ट एंड रे एते भी नाही. ओके. नो सर. होनी विजिबल. फर्स्ट सर पार्ट टा पार्शियल बहुत माने लेफ्ट साइड रे साइड टा देखाउछ. कटि जाइछि. ना कटी ए जोडा साइड रो टिके किंतु लेफ्ट साइड टा विजिबल रहउची तो डायमेंशंस एग्जांपल्स. सर किछि आसुनी सर से लेफ्ट साइड रो खाली ब्लैंक आछी आ टिके दी तीनटा खाली लाइन देखाउची हेटा भी माने क्वार्टर. Let me check. Oh, I got it. Is it visible right now? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Okay, good. देखो किमती टाइप रो डायमेंशंस बना हुए. डायमेंशंस रीड कर परछ तो ट्राई करिवो एसे गुडा को मल्टी डायमेंशनल रखिया पे एटलीस्ट 8 टू 10 डायमेंशन सेमति किछि रखिवो. आ सबु पैराग्राफ रे माने निजर आर्गुमेंट्स आ आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करिया पे एग्जांपल्स सेटा सबल कोट करिवो. आ आर्गुमेंट को कोट करिया पे जो भी एग्जांपल्स देबो तको निजे फैक्ट्स एंड फिगर्स से सपोर्ट करिवो. एटा से एसडीआई विषय तुम किछि भी कहूछ. ओके, तो एसडीआई रे रिसेंटली इंडिया रे कोन रैंकिंग अछि से टाइप रे कहबार अछि, से टाइप रे मेंशन करबार अछि. ओके, तो ई टाइप रो प्रति एसे पे गोटे गोटे एमती स्ट्रक्चर्स बनाओ जेमति कि एग्जाम रे से टाइम टा माने मे बी जेमति 15 मिनिट्स टाइम भीतर गोटे स्ट्रक्चर बने हबो. ओके, इज इट क्लियर? कि लेट अस से एनवायरनमेंट रे इज द स्क्रीन विजिबल राइट नाउ? Yes, sir. एनवायरनमेंट रे देखो लेट अस से क्लाइमेट जस्टिस ता ऊपर देखो गोटे स्ट्रक्चर केमि बना हेछि. ओके, कि क्लाइमेट जस्टिस को तुम डिवाइड करि परिबो. सोशल जस्टिस, doing justice during to the environment itself, political and ethical angle. Okay, এটা নিজে নিজে হিসাବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ. ଓକେ, ତାପରେ କିଛି କିଛିଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଏସେକୁ କରିପାରିବ. ଓକେ, ତ ଏସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋରିଂ ଟପିକ. ମାନେ ମେନ୍ ମୋର ଏଟା ଶୋ କରିବାର ରିଜନ ଥିଲା କି
जेहेतु एसे टा बहुत स्कोरिंग टॉपिक, you need to make sure that you get a very good mark in essay. Okay, तो essay रे try करो. एक्सक्यूज मी सर, Sure. से जो एनेक्डोट आपण देखैले एनवायरनमेंट रो सेटा टिके माने ग्रुप रे शेयर करि परिबे सो दैट एज अ रेफरेंस वी कैन यूज इट अक्रॉस, इट Sure, विल बी sure, वेरी sure. हेल्पफुल. I'll share the framework of each essay. Okay. जो मो Yes. टॉपिक्स गुड़ा को कहली, लेट अस से एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक, एबे तो माने टाइम रे तो कांस्टेंट्स अछि. गोटे मु एबे ट्राई करछि कि दुटा तीनटा जीएस रो पेपर भी एमती कवर करिया पे. ओके, तो एबे तो ईच एंड एवरी एसे वी कैन नॉट कवर, but I will take separate session for essay in which I will tell you on how to approach the essay, how to prepare a multidimensional essay. Okay, तो यदि multidimensional essay करूछ लेखुछ जदि, तो देखो essay रे बहुत पिला थांती डबल डिजिट स्कोर करंती हला, आ बहु काउ किछ एक्सेप्शनल पिला थांती 150 रे भी स्कोर करंती आउट ऑफ 250. ओके, तो आमे एमती essay लेखिया दरकार कि एटलिस्ट आमे जेमती गोटे सेफ जोन रे रही परिबा. ओके, माने एक्सेप्शनल पिला यूपीएससी रे अराउंड 150 स्कोर करंती. ओके, बहुत पिला भी अछंती 90s रे भी रही जांती. ओके, तो तमे एसे रे 150 रखो कि 90 रखो, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 60 मार्क्स. ओके, दिस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. जेतल कि जीएस 1 2 एंड 3 रे ठीक है लेवरेज कम थे हमारा. ओके, जीएस 1 2 3 रे जदि एवरेज टाइप रो प्रिपेयर करछो 90 टू 100 से रेंज रहइबा, आ बहुत भलो प्रिपेयर करले मे बी 100 टू 120 से रेंज रे. ओके, तो एठी गोटे पेपर जति डिफरेंस क्रिएट करि परिबो, एठी तीनटा पेपर रे कंबाइंड एफर्ट रे भी सेति डिफरेंस क्रिएट करिया डिफिकल्ट रहबो. दैट इज माय लॉजिक. माने बुझी होछ तो. यस सर. ओके, सेमती एथिक्स रे भी गोटे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे मार्क्स रो. पिला माने 90s रे भी रखंती और पिला 130s रे भी रखंती. ओके, तो ए पेपर गुडा कर केयरफुल रहले वी कैन गेट वेरी गुड मार्क इन मेंस. और नेक्स्ट है ऑप्शनल यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. ऑप्शनल रे 500 जदि रहलानी ओपीएससी ए वर्ष कोन केमती मार्किंग करबो तो वी डोंट नो. स्टिल you should prepare for scoring more than 300 plus. Okay, that should be your goal for optionals. Okay, तो essay even जदि philosophical essay भी पढुची, माने केते जण थांती लेखि पारंती philosophical essay, जदि तादर भी difficulties रहउची लेखि बारे philosophical essays, you can cite some examples and you can deconstruct a philosophical essay to a multidimensional essay. Okay, तो सेमती मल्टीडायमेंशनल एसे रखिले एटलीस्ट 121 रु 140 रेंज भीतर तुमे रखि परिबो स्कोर. ओके, जदि एसे रे मल्टीपल डायमेंशंस रहला, मल्टीपल एग्जांपल्स रहला. सो इज माय अप्रोच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और कैन यू सजेस्ट सम बेटर अप्रोचेस? एनीवन? सर डाउट थिला सर. हां श्योर. सर से एनेक्डोट रे सर केमती कोन माने स्टार्टिंग केमती करिवु सर से ऊपरे टिके देखो फोकस करले. एनेक्डोट्स टा किछटा प्रिपेयर करथिबो, 5-6टा एनेक्डोट्स प्रिपेयर करथिबो कि अराउंड 10, किंतु डिपेंड कर जदि एसे रो कॉन्टेक्स्ट अछि, जदि हमें यूज करि परिबा ताहाले एनेक्डोट यूज करिबा. ओके, अदरवाइज वी शुड नॉट यूज. किंतु एसे रो इंट्रोडक्शन रे हमें एमती गोटे थीसिस लेखु. थीसिस माने कोन, जेमती गोटे रिसर्च पेपर रहला, तार इनिशियल इंट्रोडक्शन जेमती वन पैराग्राफ लिखा हितो पूरा रिसर्च पेपर विषय रे लिखा हितो सेही टाइप रे थीसिस बनायर अछि. ओके, लेट अस गोटे कोट रो स्टार्ट कलो, तापर एसे गोटे थीसिस बनेला. ओके, तापर एसेटा गोटे फ्लो टाइप रे लिखिबो. लेट अस से स्टार्ट करियो थीसिस पर स्टार्ट करियो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोन अछि से टॉपिक ऊपर सेठरू स्टार्ट करियो. ओके, तापर लेटेस्ट से आसीबो कि करंट डेवलपमेंट्स कोन अछि, तापर लेटेस्ट से आसीबो कि फ्यूचरिस्टिकली हमें कोन कोन करि परिबा. तापर गोटे काउंटर व्यू भी किछ गोटे दबो. जो काउंटर व्यू जदि केतल किछ गोटे दउचो सेथिरे तमर एक्स्ट्रा 10 रु 15 मार्क्स तमर आसीबो डेफिनेटली एसे रो. सेटा गोटे एसे को एक्स्ट्रा गोटे पंच दिए. ओके, तो एसे हमें केमती लिखिबा से ऊपर मु गोटे डिफरेंट सेशन नेबी. सो वी शैल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेपर्स, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.
सर एसे रो मेनली प्रॉब्लम फर्स्ट मते हुए कोना तार कॉन्टेक्स्ट टा एग्जैक्टली बुझिबा पई तो माने गोटे आमे जोटा भाबु ओके कॉन्टेक्स्ट बुझिया पे तार कीवर्ड्स टा भलसे स्टडी करियार अछि एसर प्रति कीवर्ड्स टाकू माने डिकंस्ट्रक्ट करके से कीवर्ड्स रो ही मल्टी डायमेंशन बनायार अछि ओके मु केबे गोटे एसे सेशन नेबी केमती ताकू डिकंस्ट्रक्ट करा हुए से विषय आई विल टेल यू इन डिटेल एनीथिंग एल्स सर एग्जांपल कोड सेरा सब मु प्रीवियस ईयर टॉपर्स खाता देखि कि कलेक्ट करूची यस तो आउ प्रीवियस ईयर किछि टॉपर्स मानको खाता देखिबे एसेंशियल कहना तुम यदि मॉडल एसे जदि जोटा अवेलेबल अछि इंटरनेट से सोडा देखिबो सेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुहे एग्जाम रो टाइम कांस्टेंट रे रिप्रोड्यूस करबा ओके तो प्रीवियस ईयर टॉपर्स मानको जदि पेपर्स देखिबो तुम जानि परिबो कि रियलिस्टिकली केति पॉसिबल होची ऐसे एग्जाम हॉल रे लिखबा आ देखिथिबो जो माने एक्सेप्शनली स्कोर करिथिबे भलो बहुत चांसेस थिबो कि से माने बहुत सिंपल ऐसे लिखिथिबे मु एटा देखिछि कि बहुत सिंपल टाइप रे ऐसे लिखि से माने एक्सेप्शनली स्कोर करंती कहना एसेटा गोटे जिनस कि जे एग्जामिनर रहउची से माने एंगेज रहे दरकार तो तुम तो एग्जांपल साइट करूथिबो से एंगेज ही जाउथिबो एंड पर्यंत ओके आ एंड रे यदि किछि गोटे काउंटर व्यू टाइप रो यदि दउचो तो ताको लागिबो कि हां किछि गोटे ओरिजिनलिटी अछि किछि एक्स्ट्रा भी तुमको बोनस रे भी दे पारे ओके अदरवाइज पूरा यदि फिलोसॉफिकल डायमेंशन यदि लिखि देलो हे भी पारे कि से बुझ भी न पारे राइट तो एसेटा मल्टी डायमेंशनल लिखिबा विथ एग्जांपल्स लिखिबाटा सबटु सेफ साइड बट केते जण बहुत एक्सेप्शनली लिखि पारंती दैट इज अप टू देम if you can write well and good otherwise you just follow the safe and secure path anything else so shall we proceed okay तो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करिबा जनरल स्टडीज पेपर रे ओके जनरल स्टडीज रो फर्स्ट पेपर तो कोन रहला इंडियन हेरिटेज कल्चर सेमती ओडिसा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी तार ईच एंड एवरी सब टॉपिक जोड़ा अछि सेगुडा को डिटेल रे बुझिबार अछि ओके तो डिटेल रे बुझिबार गोटे वे होची कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस गुडा को देखिबा ओके तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस गुडा को देखिकी थीम्स गुडा प्रिपेयर करियार अछि ओके एंड अकॉर्डिंगली you need to prepare your notes let us and I would say one thing कि जनरल स्टडीज रो पेपर 1 2 3 इंट्रिकेटली लिंक्ड आकु सेपरेटली पढिबार नाही ओके लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल जनरल स्टडीज पेपर 1 रे जोटा रहउची जियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा अब किस समय पर हमें क्वेश्चंस गुडा को देखिया प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन क्लियर भी हे जिवो ओके कि देखो important geophysical phenomenon like earthquake tsunami volcanic activity cyclone geographical okay तो ए पार्ट जोटा रहला that is directly linked to which part can anyone say डिजास्टर geography मैनेजमेंट टा Disaster management. sorry The disaster management. yes very good तो geography को हमको लिंक करियर अछि पेपर 3 रो डिजास्टर मैनेजमेंट से ओके तो जियोग्राफी रो भी जो आंसर्स हमें लिखुछु से डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल भी थाए गोटे तमे देखि भी थिबो से गुडा को भी मेंशन करी हबो ओके तो एटा जोटा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन कंट्री एंड ओडिशा ओके तो ताको ता सहित लिंकेज करिवार अछि प्लस बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट जदि जियोग्राफी रो हमें फर्स्ट पार्ट ता हमें देखिबा ओके फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया सेही पार्ट ता देखिबो से पार्ट रे गुडा बायोडायवर्सिटी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आसे पेपर 1 रे आई विल शो यू तो सेटा को हमें डेफिनेटली आ सहित लिंक करि परिबा तो जियोग्राफी बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर किछटा पार्ट जियोग्राफी सहित लिंक्ड रहउछ ओके तो ए गुडा को कंबाइन करी प्रिपेयर करिवार अछि इज इट क्लियर हेलो सर श्योर सर ओपीएससी किछि पार्ट डिलीट करछि यूपीएससी रो
तो सेटा एक्सक्लूसिवली छाड़ियार अछि ना बिकॉज ज्योग्राफी रे कहबी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड सेटा डिलीट करछि आउ फैक्टर रेस्पोंसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेटा भी डिलीट कर देछि ओके यूपीएससी सिलेबस रो आउ देखो सेई से जगह रे डिलीट करछि देखो मु तुम गोटे एग्जांपल शो करूछि एटा तुम डायरेक्ट ओपीएससी साइट रो ही आनिछि ओके सॉरी देखो एबे सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ तळे तुम पढिबो गोटे भी डिजास्टर मैनेजमेंट रो किछि भी नाही ओके एटा ऊपर लिखा है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री और सेथरे भी हे जाइछि लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म ए माने प्योरली कॉपी पेस्ट करूछंती ओके तो यूपीएससी रो जहा अछि सेति के श्योरली प्रिपेयर होवर अछि ता सहित जति ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स ओके तो माने मोर पॉइंट ऑफ व्यू कि सब किछि प्रिपेयर करिवार अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि थीम्स बनायर अछि थीम्स रो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिवार अछि ओके और डू एथिरे यू हैव एनी सिक्योरिटी रे अदर भी से कहले सिक्योरिटी सर सेही तो मु आइडेंटिफाई करछि बहुत गुडा माने सब इस टॉपिक रे किछि किछि पार्ट डिलीट करछि तो ओवरऑल वर्ल्ड पार्ट डिलीट कर देछि जेंते वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री ने डिलीट हे अछि वर्ल्ड हिस्ट्री यू नीड नॉट स्टडी इवन जदि तुम माने यूपीएससी ज्योग्राफी पे ऑफ भी वर्ल्ड प्रिपेयर भी करथा डिलीट कर देछि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी डिलीट कर देछि ओके एबे आउ यदि तुम यूपीएससी पे भी जदि भी प्रिपेयर करथा तो मु केबे भी सजेस्ट करना थांती कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे प्रिपेयर करियो स्पेसिफिकली किछटा टॉपिक्स अछि अराउंड 10-15 टॉपिक्स सेति टॉपिक ही प्रिपेयर करियो अछि कारण वर्ल्ड हिस्ट्री आजकल बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आछि ता पे यदि स्पेसिफिकली प्रिपेयर करिवो यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम जोटा कि तुम ऑप्शनल एथिक्स एसे से चारटा पेपर देले दैट वुड बी मोर रिवार्डिंग एथिक्स देखो गोटे पेपर दैट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 50 मार्क्स and same holds true for your optional and same holds true for your essay तो जोड़ा स्टैटिक पार्ट अछि ताकू डेफिनेटली फॉलो करियार अछि ओके एनीथिंग एल्स सिमिलरली पेपर 1 रो जोड़ा सोसाइटी रहउछ सोसाइटी पार्ट जोड़ा हमर रहउछ एठी रहला salient features of Indian society diversity of India and Odisha तापर जोड़ा रहला रोल ऑफ women organization जहाँ भी सब टॉपिक्स गुड़ा रहला ऑर्गेनाइजेशन रहला से सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स रहउची सोशल जस्टिस रे ओके तो पेपर 1 रो इंडियन सोसाइटी एंड सोसाइटी ऑफ ओडिशा से पार्ट जोटा रहला आउ पेपर 2 रो सोशल जस्टिस आको कंबाइन करी प्रिपेयर करियर अछि तो एमती ब्रॉड थीम्स जोड़ा का हमर बनिला सेमती दैट शुड बी योर अप्रोच ना कि पेपर गुड़ा को सेग्रीगेट करी प्रिपेयर करिया पे इज इट क्लियर ओके तापरे सेपरेट रहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस ताको आइसोलेट करी प्रिपेयर करी हबो आउ जोटा रहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेटा भी आइसोलेट करी प्रिपेयर करी हबो बट यू इकोनॉमिक सर्वे टा मस्ट पढिबार अछि ओके इकोनॉमिक सर्वे सो एबे हमें स्टार्ट करिबा गोटे टॉपिक रो लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पार्ट रो एबे डिस्कशन हमर स्टार्ट करिबा ओके ब्रॉडली एबे जाना पड़ी गला था कि हमें अप्रोच कौन कौन रहिबो और डू यू हैव एनी डाउट तो इकोनॉमिक सर्वे यू कैन फॉलो विजन एस तारो कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स अछि एंड ओडिसा रे इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िया को पड़िबो ओके और बजट डॉक्यूमेंट्स भी दी जण कर ओडिसा रे भी और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट रो भी कारण बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स थे जोटा कि बजट डॉक्यूमेंट रो डायरेक्ट आसी थे ओके आ गोटे कथा जेतले सोसाइटी प्रिपेयर करूछ सोसाइटी रो गोटे पार्ट भी रहउछ
तो पेपर 3 रे जति रोच जोटा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जोटा रहउची सोशल सेक्टर स्कीम पे से पार्ट गुडा को भी मिक्स करी प्रिपेयर करियर अछि. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द हिस्ट्री पार्ट. ओडिशा रिलेटेड किछि इश्यूज जे कि कम्युनलिज्म रीजनलिज्म एगुडा को जानिबा ପାଇଁ କିଛି ऑथेंटिक साइट्स କିଛି कहि परिबे कि आई मीन टिके एग्जांपल कोट करिया ପାଇଁ कि रिसेंट इश्यूज वगैरह तो रैंडमली चेक कला को बहुत सारा वेग इंफॉर्मेशन आसुची सो ओके, एक्चुअली देखो रीजनलिज्म हैला कम्युनलिज्म हैला तार जो पर्टिकुलर सो फ्रेमवर्क्स गुडा थाए मु शो करिवि सेही टाइप रो फ्रेमवर्क रे आंसर्स लिखिबार अछि. यस, आउ रिसेंट एग्जांपल्स में सेमती नेट रो ही सर्च करिया पड़ियो काना ता पे सेमती तो किछि ऑथेंटिक सोर्स नाही एज सच. ओके, you have to search from the internet and you have to make your own sources. sir because there syllabus re be mention karichi their problems and remedies, so if you want to quote the remedies, so what should be our approach? I mean ame seti ko mane kiछि government ro kiछि authentic kiछि remedies ki kon kemti seta find out karibu jani honi sir. मु गोटे शो करूची कम्युनलिज्म जोटा कहलो तार को टाइप रो फ्रेमवर्क बनि परिबा. Is the screen visible right now? All of you, is it visible? Black screen. No sir. Today I'm facing a lot of issue with my laptop. Just give me a minute. Okay, leave it. In the next session, I will discuss about that. Actually, I'm facing some issues while opening the Evernote. So let us discuss these topics, and in the next class, I will take up those specific issues and specific doubts of yours. So I will take a session on Indian society. In that session, we'll discuss about communalism, regionalism, and all those aspects, right? So ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପେପର 1 ରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି. ଓକେ, ସୋ
syllabus रे कोनटा रोज Indian culture covering the salient aspect of art forms, literature and architecture. Art forms, it can be like the visual art and the performing arts, right? Visual art and performing arts. ଆଉ ଆ ଭିତରେ I have made a list of important topics. Like in art forms, you first of all you need to, the most important part in this topic is architecture, right? And in architecture, the most important part is the temple architecture. तो जदि स्पेसिफिकली एबे लिमिटेड टाइम्स भीतर पढ़िबार अछि स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ि हबो लाइक टेंपल आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर एंड देन म्यूजिक एंड डांसेस, पेंटिंग्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन. एतिक पार्ट जदि एबे लिमिटेड टाइम्स भीतर प्रिपेयर करियर अछि you can prepare, okay? And in temple architecture you need to prepare about the three types of temple architecture, that is the Nagara, Dravida and the Besara style of temple architecture, with a special focus on the Kalingan temple architecture, okay? How Indus Valley civilization to be बहुत important, okay? सेटा ancient history perspective रू ଆଉ art and culture perspective रू भी. तापर हमर रहले लिटरेचर पार्ट टा, ओके? आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. आर्ट फॉर्म भितर और विजुअल आर्ट्स भितर वी कैन prepare for the sculpture, dances, sorry, painting, and then rock art architecture and temple architecture. These are the important parts. This is the broad division of syllabus, and from that you can first read all the important topics, and after that you can go for the other topics if you have time. Our literature part रे important होचे हमरो Sangam literature and Bhakti and Sufi literature. Bhakti and Sufi literature, you also have to specifically prepare for Odisha, the Bhakti movement of Odisha, okay? ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଓକେ? ଆଉ କିଛି ମିସେଲେନିୟସ୍ ଟପିକ୍ସ ବି ଅଛି. I will share this document and you can make your priorities and accordingly you can read. ଆଉ ancient and medieval India रो ई पर्टिकुलर जो सब रही एम्पायर्स गुड़ाक, दीज आर इम्पोर्टाट, ओके? लाइक गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, तार जो कल्चरल पार्ट्स गुड़ाक रही यू नीड टू स्टडी, ओके? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक. तो जदि हमें सेग्रीगेट करबा अराउंड 10 टॉपिक्स रहबो हमर आर्ट एंड कल्चर रे, ओके? तार ब्रॉडली सोर्सेस रहबो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पे 11th तमिलनाडु हिस्ट्री, और स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स गुड़ाक रहिला लाइक स्कल्पचर रहिला, टेंपल आर्किटेक्चर रहिला, से सब जिंस गुड़ाक नितिन सिंह रू सिलेक्टिवली रीड करि हबो. You need not read this book from cover to cover. You just need to specifically read the topics. सर एथर प्रिलिम्स रे तुगलक डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी रू भी क्वेश्चंस आसीतिला. तो मिडिवल हिस्ट्री रे तो डायनेस्टिक स्पेसिफिक प्रिपेयर करियो पड़ियो कि डायनेस्टी स्पेसिफिक रे मु जो मेंशन करी जो डायनेस्टी गुड़ाक से गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके? एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर गोटे डाइसी पार्ट, सेथरे स्पेसिफिकली किछि किछि टॉपिक्स गुड़ाक प्रिपेयर करिवार अछि, and if time permits you can go for the other topics, okay? Initially you just need to read the topics which are most important, like architecture. In architecture you need to read the temple architecture like Nagara, Besara and Dravida style of temple architecture, and in that you have to specifically read about the Kalingan form of temple architectures, okay? And the rock cut architecture, as I have mentioned here,
ଆଉ visual arts रे जोटा हमर रहउची म्यूजिक रे लेट से हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक म्यूजिक रहला डांसेस रे हमर जेहेतु जोटा ओडिसी माने क्लासिकल डांसेस जोटा रहिला ओके और क्लासिकल डांसेस रे जो डिवाइन ओरिजिन रही छे I think you would have heard about the divine origin of classical dances, how Bharat Muni wrote the Natya Shastra and all. सी पार्ट गुडा को टिके प्रिपेयर करियर अछि ओके आउ सुल्तानेट पार्ट जोटा माने कहूछ सेटा माने ए सब पार्ट्स कवर कला पर यदि टाइम परमिट करजी यू कैन प्रिपेयर विजयनगर एम्पायर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत टाइम यूपीएससी भी क्वेश्चंस आसी छी ओके तार सोर्सेस अछि सीसीआरटी वेबसाइट रे भी माने विजुअल आर्ट्स हला परफॉर्मिंग आर्ट्स हला ये सब डिटेल्स भी रही छी आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट यू कैन check those things. Anything else regarding this art and culture? Okay. Now we shall proceed to the modern Indian history part. तो एबे हम देखियो आर्ट एंड कल्चर कोन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ए पर्यंत आसी छी यूपीएससी रे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन एटा कहितली इनिशियली मेंशन भी करितली कि वैदिक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशंस एगुडा पढिबार अछि ओके then how do you explain the medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? Bhakti literature, rock cut architecture, Bhakti movement, numismatics, Gupta era numismatics. Like numismatics is all about the coins. Okay. Buddhist stupa art. This will come under the architecture. So accordingly, you need to prepare. As I have said, Vijayanagar, you can see Krishna Devaraja, the king of Vijayanagar, was not only the accomplished scholar himself, but was also a great pattern of learning and literature. In sculpture, you need to read the Gandhara sculpture, the Amravati sculpture, and the Mathura school of art. Okay. So these are the important areas. In literature, Sangam literature, Tandav dance, I have told you about the divine origin of classical dance. This is all about that one. So do you have any doubt regarding this on how to prepare these topics? All of you? Okay. So let us proceed to the next topic. The temple architecture of Odisha. This is very simple. You can find the details in the book itself. In the history of Odisha book written by Haryar Panda, you can find all these topics. And these parts you will not find in any other book, like socio-cultural development of Odisha, Bhakti movement of Odisha, evolution and growth of Odia language. If you search these topics in internet, you can find some research journals. You can very well refer them. If you want, I can share. I have all these documents regarding I have the documents regarding all these topics. Okay. Hello, sir. Yes. Sir, Odisha history part रे several dynasty mention करची जोटा आसी पारियो मेंस रे देखो सेगुड़ा ब्रीफली नोट बनार अच्छी गोटे ही ओडिशा हिस्ट्री आमको गोटे ही बुक फॉलो करार अच्छी दैट इज हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रिटन बाय हरिहर पंडा यू नीड नॉट फॉलो एनी अदर बुक आ जहां भी रहउची नेट रो सर्च करी सप्लीमेंट करो एवो नोट रे किछि शॉर्ट नोट्स बनै दियो ओके सर आर्ट एंड कल्चर ପାଇଁ ହିଁ क्वेश्चन थिला कि जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा तो मते लागुची से जेति कि डायनेस्टी मेंशन करैछि सा भितरो ही यस यस वेरी गुड डायनेस्टीज रे प्रति डायनेस्टीज रे जो सोशियो कल्चरल पार्ट्स गुडा को रहउची सेगुडा यू कैन मेंशन ओके से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नेट सर्च कले भी मिली जाए यू कैन चेक इट आउट ओके
ସେ ଓଡିଶା ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଅଛି हाँ ସବୁ yes ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। yes I have found that one. So तो से टॉपिक्स पर हमर रहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मु बहुत बार भी एम्फसाइज करिछि प्रीलिम्स पूर्व. Those who have attended my class would have known that you need to read spectrum from 1750s to 1947. Each and every topic you need to read. Okay. So मेन्स पर्सपेक्टिव रु आमे किछि किछि तार इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडा को सेग्रीगेट कर दे परिबा. मु एटी सो सेग्रीगेट करके मेंशन करिछि. ओके लाइक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी 18th सेंचुरी केमति थिला व्हिच हैव helped the East India Company in gaining the territories. Then emergence and fall of Marathas, like the Third Battle of Panipat, how it has resulted in the fall of Marathas. Then causes of British success of India, the policy of ring fence, subsidiary alliance, doctrine of lapse. These are the policies through which they have acquired the territories from Indian princes. Okay. Then economic impact of British rule in India. I have segregated all these topics. Okay. If you read the syllabus, it is written modern Indian history from about middle of 18th century. Okay, that is from 1750s until present. Significant events, personalities and issues. Personalities like जेति important personalities माने रहले यूपीएससी रे बहुत personalities टाइप रे भी क्वेश्चंस आछी. ए वर्ष ओटा आस्तला गांधी और अंबेडकर को रिलेटेड रे राइट. रविंद्रनाथ टैगोर यस सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर सॉरी. तो सेई टाइप रो जो क्वेश्चंस गुडा रहउची जेति इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज माने अछंती तांकर भी गोटे शॉर्ट नोट्स बनाएर अछि. आ जेति इंपोर्टेंट टॉपिक्स लाइक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एथु बहुत टाइम क्वेश्चंस आसे. हाउ वुमेन मूवमेंट्स लाइक राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर से टाइम में कौन सब रिफॉर्म्स आनी थिले कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी किछि किछि पार्ट्स गुडा कर होचे से गुडा को बहुत इंपोर्टेंट. तो एमती टॉपिक वाइज थीम्स बने कि थीम्स रो यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा देखिबो ए थीम रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस गुडा का आसुची. ओके स्पेशली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हला रिवोल्ट ऑफ 1857 हला ट्राइबल अपराइजिंग आउ जेति कि हमर गांधीयन मूवमेंट्स जेति गुडा रहला से गुडा को भी बहुत भलो से प्रिपेयर करियर अछि. ओके प्रीलिम्स कोनटा हला ना टिके डिटेल रे प्रिपेयर करियो पड़थला लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करियो पड़थला एथरे थीम्स गुडा को प्रिपेयर करियर अछि. ओके डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लाइक वुड्स डिस्पैच परठो केमती ट्रांसफॉर्म करि करि आछि हमर एजुकेशन गुडा को से सब जिंस प्रिपेयर करियर अछि. फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसेस स्टेट्स कम्युनलिज्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हेले इंडिपेंडेंस पर जो फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म गुडा अछि सोडा को सोसाइटी रे रहइबो. ओके कैन यू पीपल रीड ऑल दिस इंपोर्टेंट टॉपिक्स थोड़े यस ग्लांस सर कर दियो. थोड़े ग्लांस कर दियो. ए थीम्स गुडा को ऊपर किछि किछि वन पेज नोट्स कि हाफ पेज नोट एमती किछि बनै देथो जोटा कि बहुत ही हैंडी हबो लास्ट मोमेंट रे रिवीजन करियो. आउ एगुडा सबति पे गोटे ही सोर्स अछि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. यू नीड नॉट रीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस. ओके तो एबे लेट अस से को भी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस रहला हम तो केमती अप्रोच करियो आंसर राइटिंग कला वाले. ओके लेट अस से 1857 रो रिवोल्ट थला व्हाट इट इज एटा इंट्रोडक्शन पार्ट रे. इंट्रोडक्शन पार्ट रे नॉर्मली व्हाट एंड हाउ ए पार्ट गुडा को इंट्रोडक्शन पार्ट रे लिखिबार अछि. ओके तापर तार कॉजेस कोन सब रहिला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ सक्सेस कॉजेस ऑफ फेलियर एंड आफ्टरमैथ. लेट अस से 1858 एक्ट्स असला कि तापर लेट अस से आउ डोमेस्टिक अफेयर की एक्सपेंशन रे से फोकस करलेनी से सब जिंस गुडा को यू कैन मेंशन in any topic. This should be the framework for writing answers for history: facts, causes, effects, aftermath and then analysis. हम किछटा क्वेश्चन भी देख परबा
Why was there a sudden spot in trace the rise and growth of socio-religious reform movements with special reference to young Bengal and Brahmo Samaj. Then 1857 uprising, Indian Renaissance, ये सब गुड़ाक हमें स्पेसिफिकली प्रिपेयर करार अच्छी ये सब थीम्स गुड़ा ऊपर वुमेन्स क्वेश्चन तुम देखियो लास्ट प्रीवियस ईयर जिते भी यूपीएससी रो क्वेश्चंस आसी छी ए जो मु थीम्स गुड़ा को बनै छी गोटे लिस्ट ए थीम्स अराउंड रिवॉल्व करू छी ओके सो यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स एज पर दिस थीम्स एटा गोटे रहला तापर रहला हमर फ्रीडम स्ट्रगल रहला ओके ए वर्ष जोडा कहउतले कि what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? How did colonial rule affect the tribals? ये सब टॉपिक्स गुड़ा को मुझे थीम्स गुड़ा करे मेंशन करे छे you can prepare as per those themes. So do you have any doubt regarding this modern Indian history? Anyone? Okay, so now we'll move towards the पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स केतरा अछि अराउंड 10 टॉपिक्स अछि ता भीतर सबटो इंपोर्टेंट होछि फर्स्ट जो पांचटा अराउंड टॉपिक्स में मेंशन करछि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंस स्टेट्स लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वार विथ पाकिस्तान एंड इंडो चाइना वार एगुडा को सबटो इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडा को ओके और अदर टॉपिक्स गुडा को भी यू मे read. Please go through these topics. ये टॉपिक गुडा गोटे राउंड पढ़ी देलो कि जो टॉपिक गुडा मेंशन करी छी or do you have any doubt regarding the post independence history? सर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट रो माने मटेरियल पढ़ देले इधर हे जीवन सर ना आउ किछि बही देखो जो मटेरियल भी प्रिपेयर करो ए स्पेसिफिक थीम्स रे प्रिपेयर करबो ए जो मु अराउंड 10 टा थीम मेंशन करी छी तुम देखो यूपीएससी रे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जते भी देखो ए थीम रे अराउंड आसी छी ओके लेट अस चेक अ फ्यू क्वेश्चंस 2022 रे भी देखो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी हैज been a continuous ongoing process since the mid 19th century discussed with examples. The reorganization of states तो मेंशन करी छै ने linguistic reorganization of states कि ता पर भी जहां reorganization of north east सेटा तो मेंशन करि परबो ये आंसर रे कि integration of prince states एटा लिखछि assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration of process of prince states okay तो ये जो टॉपिक्स गुडा को रहला accordingly you can prepare your notes. रेफरेंस बुक आप आई थिंक इंडिया आफ्टर गांधी रेफर करी हबो बट ए टॉपिक गुडा को नेट सर्च करले भी बहुत भलो मटेरियल्स भी अवेलेबल अछि राइट और डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एटा एक्चुअली सबटो भलो मार्क फेचिंग रे हमें हिस्ट्री रो जति पार्ट हमें ए पर्यंत कवर करले सबटो बेटर मार्क्स हमें रख परियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट जोडा कि हमें स्पेक्ट्रम रो रेगुलरली पढो ओके तापरे पोस्ट इंडिपेंडेंस से जति सिलेक्टेड थीम्स रहला आफ्टर दैट यू मे गो फॉर द आर्ट एंड कल्चर पार्ट if you have time. सर Yes. सर जो रेडिकल फेमिनिज्म जो गत वर्ष पड़ी थिला सर क्वेश्चन रे तो सर सेटा मॉडर्न हिस्ट्री रे आसीबो कि पोस्ट रेडिकल फेमिनिज्म सेटा सोसाइटी पार्ट रे ही आसी जीवन ना तो सर ता पई किछि स्पेसिफिक नोट्स किछि हमें प्रिपेयर करिवो कि सेमति माने देखो वुमेन मूवमेंट्स रिलेटेड जहां भी अछि तुमको नोट्स प्रिपेयर करियो पड़िबो हला
प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस जहाँ भी सब अछि हला कि रिसेंटली भी जहाँ भी डेवलपमेंट्स रही छी women reservation bills and all everything you have to prepare and এটা बहुत ही important topic women related topics रहला जोड़ा society रो okay anything else so proceed करियो तापरे ओडिशा स्पेसिफिक जो टॉपिक्स गुड़ा रहला लाइक कलिंग वार एंड इट्स सिग्निफिकेंस डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा yearly resistance movements in Odisha creation of Odisha province freedom movement and Prajamandal movements you can find all these topics in history of Odisha book right you need not refer any other book for it is it clear सर से पंडा बही रे सर ये प्रॉब्लम अछि तार स्पेसिफिक रिलीजन विषय रे देनी बास खाली जैनिज्म विषय रे देछि विषय कौन हला sorry सर हरिहर पंडा बुक रे ना सर माने स्पेसिफिक ओडिसा रे माने फोकस करनी को रिलीजन विषय रे तो जदि स्पेसिफिक रिलेटेड दरकार तुम नेट रे सर्च करि परियो आ किछटा जर्नल्स भी मु देखि छि भी मिली भी पारुछ ओके तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर जीएस रे देखो को भी टॉपिक रे बहुत डेप्थ रे प्रिपेयर करबार नाही बिकॉज़ जे तुम गोटे टॉपिक रे बेसी डेप्थ रे प्रिपेयर करूछो तुम किछि ना किछि अलग टॉपिक भी लूज करिवो ओके तो तुम मेन देखो आंसर रे तुम्हारा स्ट्रक्चर्स टा भलो रहबा दरकार and you have some kind of content to fill those structures okay ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ରହିଲା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆ ପାଇଁ ସୋର୍ସେସ୍ ହଉଛି ମାନେ ଟପିକ୍ସ ହଉଛି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଯଦି ହୋଲ୍ ଆମର ମେନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ସରିଯିବ ବଟ୍ वी कैनॉट कंप्लीट जो टॉपिक गुड़ा बेसी रिवार्डिंग रही लाइक एबे पेपर वन सबुठ रिवार्डिंग टॉपिक होची इंडियन सोसाइटी पार्ट टा ओके आउ सेम टॉपिक भी रहुची पेपर 2 रे भी तो दीटा कर हमें कंबाइन करी प्रिपेयर करि पारे एंड दैट वुड बी मोर रिवार्डिंग ओके ना कि एमती स्पेसिफिक किछि प्रिपेयर करिवा राइट after that let us look into the geography part the geography रो भी सेमती geography नॉर्मली क्वेश्चंस टिके कॉन्सेप्चुअल थाए जियोग्राफी रो मु सेमती किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनै छी और एपर्यंत भी जेते क्वेश्चंस आसी छी ए सब टॉपिक्स ऊपर आसु छी ओके तो जियोग्राफी पेपर 1 रो जियोग्राफी रहला और पेपर 3 रो बायोडायवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट ए सब जनसोडा कंबाइन करी प्रिपेयर करियर अछि ओके तो जियोग्राफी रो लेटेस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जोड़ा जोड़ा रहला कि जियोमॉर्फोलॉजी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट टेक्टोनिक्स कोल्ड माउंटेन सिस्टम्स वोल्केनिज्म ओशन करेंट्स की लेटेस्ट से इंडियन स्पेसिफिक जो देखिबो मॉनसून ता रहला ओके वाटरशेड मैनेजमेंट सेम सिमिलर टॉपिक पेपर 3 रे भी बहुत टाइम पचरा हुए ओके तो ये सब टॉपिक गुडा को एग्रीकल्चर सहित कंबाइन करके भी प्रिपेयर करी हबो और ए पार्ट गुडा को भी बहुत रिवार्डिंग ए सब तरह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अछि और ए टाइप रो क्वेश्चंस गुडा रे डायग्राम होछि मोस्ट तमे जिते भी फैक्ट फिगर जहाँ भी आंसर बनाओ जिते भी स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाओ यदि खाताटा अट्रैक्टिव रहइबो ताहले जाई ही इवैल्यूएटर जे मार्क्स देबो माने आज का डेट रे ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो सी टाइप रो ही खातार इवैल्यूएशन सब करा होछ ओके से माने अराउंड लिमिटेड टाइम फ्रेम भीतर 20 कॉपीज अराउंड चेक करूथिबे और आज तो समस्त ही फुल आंसर्स लिखुचंती तो समस्त कॉपी जदी 30-35 पेजेस जे देखिबो से माने 600-700 पेजेस तम पढियो पडिबो आउ केबे एक्सपेक्ट भी करनी कि से ईच एंड एवरी डिटेल्स तुम खातार के पढ़िबे ओके सो योर पेपर शुड बी अट्रैक्टिव टू द आईज accordingly you frame your answers it should be a structured one it should have diagrams and it should be neat and clean right
please glance through the important topics, and if you have any doubt you can ask. Like physical geography रो ये सब पार्ट्स उड़ा रहला. इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमें पेपर 3 रो इंफ्रास्ट्रक्चर से सब सहित भी लिंक करके प्रिपेयर करि परिबा. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस से सब सहित लिंक करि परिबा. Like resources, renewable energy, then atomic energy, forest resources of India, groundwater resources. Industries specifically जो किस industries रोजी like oil refineries, sugar mills, cotton and textile industries. These are all important topics. अब एग्रीकल्चर ये सब टॉपिक गुडा को पेपर 1 रो पेपर 3 से तो लिंक करी प्रिपेयर करियर अछि. ओके, अर्बनाइजेशन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट. अर्बनाइजेशन को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तीनटा पॉइंट ऑफ व्यू रो प्रिपेयर करियर अछि. एने तीनटा रे ही क्वेश्चंस आसुची. और इवन यूपीएससी रे तो जियोग्राफी से तो हिस्ट्री भी कंबाइन करी भी क्वेश्चन पहुंचाउछंती. लाइक दिस वन, explain the role of geographical factor towards the development of ancient India. Okay. Otherwise, today important topics should are like monsoon. Why is southwest monsoon called the Purbiya in Bhojpur region? Those things. And like this topic, which one? Renewable energy. This is one important topic. You can find a lot of questions for that. Okay. Examine the potential of wind energy in India and explain the reason for the limited spatial spread. Physical geography dot rahila. Briefly mention the alignment of major mountain ranges in the world and explain their impact on local weather conditions. Landslides. Landslides se dekha paper 1 the question pachara hai. How similar kind of question can also be asked in the disaster management part. Melting of Himalayan glaciers. Because ये similar theme रे बहुत type of question आछि. 2021 में भी आछि और 2021 में दीटा ही question. Sorry. Ocean currents देखो 2019 में भी आछि और similar type of question एबे 2022 रे भी. What are the forces that influence the ocean currents? So ये सब टॉपिक्स गुडा देखि कि एमति किछि थीम्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडा को प्रिपेयर करो और अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. और प्रति इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडा करो माने डायग्राम्स रहला, स्ट्रक्चर्स रहला, सेडा सब प्रिपेयर करिवार अछि. ओके, तो से रिलेटेड थीम रो किछि भी क्वेश्चन आसला से गुडा को लिखिबार अछि प्लस क्वेश्चन स्पेसिफिक किछि लिखिबार अछि. दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी. watershed development ये टाइप रो क्वेश्चन पेपर 1 रे भी पचरा होची, पेपर 3 रे भी पचरा होची. इन व्हाट वे माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया. तो वाटरशेड को टाइप रो थाए हला, माइक्रो हला, मैक्रो हला, से सब क्लासिफिकेशन से सब पढ़े छै. एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक वाटरशेड डेवलपमेंट. देखो ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स 2015 में भी ये टाइप रो क्वेश्चंस आसी छै. ओके, स्मार्ट सिटीज, urbanization related jete bhi topic asla, you will certainly find one or two questions. That is for sure in this mains examination. Fold mountain system, theory of continental drift, that was asked in 2013. This is important geophysical phenomenon such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, geophysical features and their location changes in critical geographical features. Okay, तो एटा जो टॉपिक्स गुडा रहला एटा डिजास्टर मैनेजमेंट सहित आरो लिंकेज रहउछ.
तार important topics like global warming, climate change, tropical cyclone, El Nino, glaciers, glacier melting जोड़े रहुचे, volcanism, desertification, urban flooding. Urbanization में जितने सारे issues रहुचे, social as well as geographical, जहाँ सब issues रहुचे, थोड़ा सब prepare करियर रहुचे. इटा बहुत ही important topic. Okay. Landslides. Similar type of question देखो paper 1 रे भी पचरा होची landslide related. ଆଉ ସିମିଲାର ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ତମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ମୁଁ ଏଟା ତ ବନେଇଛି पेपर 3 ଆଉ पेपर 1 को कंबाइन କରିକି you can find similar type of questions in paper 3 also. Okay. Account for the huge flooding of the millions of cities in India including the smart ones like Hyderabad and Pune. Similar देखो urban flooding बहुत बार similar type of questions आसीचे. Okay. एटा देखो 17 देखो major cities of India are becoming vulnerable to flood condition. That was asked in 2016. And similar type of question was asked in 2020. तो एमती previous year questions गुड़ा देखले किसी किसी themes गुड़ा बने होगा. And you need to prepare according to the themes. Okay. Monsoon, it was important theme. Shrinking of Himalayan glaciers. El Nino रो effect कौन रहुची monsoon ऊपर. Tropical cyclones. एटा माने geography related भी पढ़ियार होची केमती formation होची और disaster management perspective रे भी पढ़ियार होची. A similar kind of answers can be written for both, whether it is paper 1 or paper 3. But paper 3 रे गोटे कथा कि disaster management केमती हबो सेटा को बेसी emphasis दबार अछि. Paper 1 रे तार geographical part गुडा को बेसी emphasis दबार अछि. Okay. But the structure would be more or less the same. Landslide in the Himalaya. Okay. And then Odisha specific topics. For this you can follow the Odisha geography book. That would suffice. And climate change, this is a theme. You can check the questions. Discuss global warming and mention its effect on the global climate. जितने भी protocols, conventions जहाँ सब prepare करिछो prelims time रे सब किसी climate change related questions रे mention करी होगा. Okay. So, do you have any doubt or anything regarding this? All of you? सर वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी पढ़े नहीं तो पीआईक्यू ऑफ यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी रे वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो बहुत गुडे टॉपिक भी लिंक्ड अछि लेटेस्ट ओशन करेंट्स एंड ऑल तो मते लगुछि पढ़िले किछि इश्यूज तो सेमति नाही. ओके ओपीएससी मेंशन करिनी हेले यू कैन रीड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट टा स्किप करि परिबो बट फिजिकल ज्योग्राफी यू नीड टू रीड. यस सर इकोनॉमी टा पचारथले इकोनॉमिक ज्योग्राफी यू कैन वेरी वेल स्किप. ଆଉ फिजिकल ज्योग्राफी सॉरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ओडिसा रो जहां स्पेसिफिक रहिछि ताको प्रिपेयर करियार अछि. ओडिसा रे भी ज्योग्राफी रो जो स्पेसिफिक जो जोन्स गुडा को रहिछि से गुडा भी सब प्रिपेयर करियार अछि. I think that geography of Odisha book would suffice. Okay, do you have any other doubt? Or shall we call this session? नेक्स्ट सेशन में हमें इंडियन सोसाइटी पार्ट टा कवर करिवे. ओके आज मते एक्चुअली एवरनोट रे टिके एक्सेस करियर इश्यूज होउची तो तार स्ट्रक्चर केमती बना होउची और केमती आंसर फ्रेम करियर अछि. आई विल टॉक इन डिटेल.
କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ପର୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ सोसाइटी पेपर 1 ଆଉ पेपर 2 ର ଆଉ इवन पेपर 3 ରେ ବି କିଛି ପର୍ସନ ବି ତାରେ ଆଡ୍ କରି ହବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେସନ ନେବି ପॉलिटी एंड गवर्नेंस ଉପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ନେବି ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ। Do you have any other doubt? सर आंसर राइटिंग रे सर प्रीवियस टॉपिक्स खाता देखुथली तो इन एवरी आर्गुमेंट दे आर गिविंग एग्जांपल मींस इफ दे आर एग्जांपल्स देखो एग्जांपल मु एसे टाइम रे भी कहली एग्जांपल्स टा एक्चुअली हमें जतले मेंशन करू सेटा एक्चुअली एग्जामिनर को माने कोन तो कहते माने से गोटे फ्लो रे जाउथबो से एग्जांपल्स को हले से कनेक्ट करि पारुथबो राइट एग्जांपल्स बहुत ही इंपोर्टेंट तमे किछि भी आंसर राइटिंग करो मेंस रो को भी क्वेश्चन रो ओके फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ी कि ताको सब टॉपिक रे तीनटा कि चारटा सब हेडिंग रे डिवाइड कर देबो प्रति सब हेडिंग रो आर्गुमेंट्स and facts and figure in support of those arguments सेमती टाइप रो लिखिबो ओके प्रति क्वेश्चन रे देखिबो तीनटा कि चारटा तारे डिमांड्स थिबो से डिमांड्स गुडा को सब हेडिंग टाइप रो करिकि मेंशन करिवो ओके आ जोठ भी डायग्राम्स मेंशन करिवार माने श्योरली डायग्राम बनेबो दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट सेटा ही खाताटा डिस्टिंक्ट करे अन्य मानठू एनीथिंग एल्स हेलो सर हां श्योर सर आमे जो गोटे गोटे 10 मार्क्स और 15 मार्क्स जो क्वेश्चन अछि आमे गोटे क्वेश्चन ऊपर मैक्सिमम केते टाइम लिमिट भीतर लिखिबा को पड़िबो कि जोटा कि आमे सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबो 180 मिनिट्स 300 250 मार्क्स डिवाइड कर दियो से अनुसार क्वेश्चन रो वेटेज दे दियो आज्ञा आउ श्योरली 20 रु 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करियर अछि को क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम देबार नहीं को क्वेश्चन को कम टाइम देबार नहीं आज्ञा सर जो क्वेश्चन ऊपर तुम्हारा कमांड कम थिबो ताकू भी यदि जस्टिफाइड टाइम देलो ओके आज्ञा ताहले भी तमे तादरे किछि गोटे फ्रेमवर्क बनै परिबो एटलीस्ट तो गोटे क्वेश्चन किछि फ्रेमवर्क तो बनै परिबो कने गोडा तो जनरलिस्ट क्वेश्चन गुडा को आज्ञा स्पेसिफिकली भी कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन थिबो सेगुडा को मे बी न लिखि हे पारे कल्चर की एंशिएंट हिस्ट्री अदरवाइज हाँ जाओ सर जहां भी टॉपिक्स रहला जीएस रो 1 2 3 रे आई थिंक जनरलिस्ट आंसर तो समस्त लिखि परिबे ओके आज्ञा सर सर आ गोटे थिला पेपर 3 रिलेटेड थिला ओके सर पेपर 3 पे देखो मु सजेस्ट करिबी कि इकोनॉमिक सर्वे इज अ मस्ट आज्ञा इकोनॉमिक सर्वे बजट से दीटा जदि डॉक्यूमेंट कवर करि दोचो both for union government and for state government स्टेट गवर्नमेंट I think half of the job would be done now similar facts and figures can be quoted in paper 1 and in paper 2 also कारण इकोनॉमिक सर्वे रो बहुत सारा फैक्ट्स फिगर्स थे तो मैं बे मैं जो डॉक्यूमेंट्स वाला बनै छी मैं शेयर कर देबी देखबो गोटे पल्सेस ऊपर गोटे क्वेश्चन थिबो आज्ञा सर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोटे थिबो पल्सेस ऊपर सिमिलर टाइप रो गोटे टॉपिक्स थिला इकोनॉमिक सर्वे रे से वर्ष रो ओके कि पल्सेस रो कोन सब बेनिफिट्स रहउची माने एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली आज्ञा इकोनॉमिक सर्वे होची बहुत ही वाइटल पेपर 2 और पेपर 3 बोथ पे आउ इवन पेपर 4 रो भी किछटा जो गवर्नेंस पार्ट अछि सेटा को कंबाइन करके पेपर 1 सहित प्रिपेयर करियार अछि ओके और पेपर आज्ञा 4 रे आंसर राइटिंग कला बेले किछि किछटा बस एथिकल टर्म्स तदर लिखियार अछि जेमति कि लागबे कि एटा गोटे एथिक्स रा आंसर अदरवाइज मोस्टली एटा पेपर 2 रे ही आंसर रहइबो ओके आज्ञा सर तो एबे जति के टाइम रहउची मोस्टली फोकस करो ऑप्शनल एथिक्स और एसे ए तीनटा पेपर रे एसरो फ्रेमवर्क्स किछि इंपोर्टेंट एसरो मु शेयर कर देबी ओके नेक्स्ट आज्ञा सेशन में ट्राई करी इंडियन सोसाइटी टा कवर कर देबा पे कहना सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही मार्क फेचिंग और सोसाइटी रो सब क्वेश्चन रो स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखि हबो वेदर इट इज कम्युनलिज्म रीजनलिज्म और व्हाटएवर कि वुमेन इश्यूज रहेला वल्नरेबल सेक्शंस रो मन रहेला वल्नरेबल सेक्शंस कोन रहि परिबे चिल्ड्रन रहबो वुमेन रहबे एल्डरली रहबे कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन रो को सेक्शन ऊपर कोन इफेक्ट्स होची ग्लोबलाइजेशन लेट अस से इफेक्ट्स होची लेट अस से होमोजेनाइजेशन हेटेरोजेनाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर सेउडा केमिति हमें लिखि परिबा
ସେଟା ମୁଁ କହିବି ଓକେ ଆଜ୍ଞା sir। सर साइंस एंड टेक पार्ट केମିତି କଭର କରିବେ ଆପଣ? ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେସନ ନେବି ମୁଁ କହିଦେବି ତାର ବି ସେମିତି ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ୟୁପିଏସସି କ୍वेଶ୍चन ଗୋଟେ ରାଉंड ଗ୍ଲାंसिंग कर दियो ତା देहरे इंपोर्टेंट टॉपिक सेग्रीगेट कर दियो साइंस एंड टेक रो एटा से नानो टेक हला स्पेस एंड टेक हला डिफेंस रहला से सब रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा प्रति वर्ष आसे बस बायोटेक रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा को ओके ओके so accordingly you need to prepare इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत मार्क फेचिंग एरिया गोटे पोर्शन सेटा भी ऑनलाइन रे यूट्यूब रे तुमको किछटा लेक्चर्स भी मिली परिबो you can prepare from that it's a very scoring portion तो जो गुड़ाक आम 20% एफर्ट देकी मु आगुरी भी प्री पूर्व क्लासेस रे भी एमती कोए आम 20% एफर्ट देकी 80% सिलेबस कवर करि परिबा ओके सो सेई 80% को हमर प्राइमरी फोकस रहइबो रेस्ट जो 20% रहला जदी टाइम परमिट कला ताको भल से प्रिपेयर करे अछि अदरवाइज यू कैन स्किप और जो चारटा सब्जेक्ट कहली एथिक्स एसए ऑप्शनल दुटा सब्जेक्ट ताको एट एनी कॉस्ट इग्नोर करिवार नाही because whether you score 10 mark extra in ethics or 10 mark extra in GS1 it will be counted as the same so GS1 रे 10 marks extra रखिबा difficult very difficult गोटे पॉइंट पर लेट अस 100 पर से सब रखिया पे टिके रिफाइनमेंट भी दरकार ओके एनीथिंग एल्स सर ओडिशा रो इंडिया रो लाइवस्टॉक रिपोर्ट किछि पढिबो कि सेटा तो मु सेमते कहि परिबिनी मु बस ब्रॉडर थीम्स कहि परिबी जोथरे कि माने प्रोबेबिलिटी रही था कि क्वेश्चंस आसीबार एमती माइनर थीम तो आई कैन नॉट से if you want you can search in internet and you can make your short notes notes making पे mostly evernote you can follow एटा बहुत ही सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज नोट्स बने होबो evernote रे एवरनोट बहुत ही स्लो चलुଛି सर स्लो तो माने देखो मोर एवरनोट से बहुत सारा मु नोट्स बनै छै आज मु शेयर भी करि परने कहिना मोर टिके लैपटॉप रे इश्यूज रहउछै अदरवाइज सोसाइटी रिलेटेड मु बहुत भलो से सेग्रीगेटेड करी टॉपिक छुडा बनै छै इफ पॉसिबल नेक्स्ट सेशन रे मु सेटा शेयर करबी अदरवाइज ताको गोटे पीडीएफ रे बनै कि शेयर कर देबी एसे राइटिंग प्रैक्टिस करूछ ना नहीं एटलीस्ट ब्रॉड थीम जोड़ा अछि ता रिलेटेड पांचटा छोड़ा एसे तो लिखिबार अछि एग्जाम पूर्व ओके एनीथिंग एल्स so shall I call it a day all of you यस सर okay thank you थैंक यू सर थैंक यू सर